कितना जल्दी आएगी? वन सेकंड सुनील नीचे बैठना खाली राजन मैडम इथे बघा अरे जो चलो यस प्लीज गो चले जाइए सर आप Dr. Awasthi will be answering your questions. Kajal, look looking fab. Thank you so much. And tell us आज के initiative के बारे में कि आप ये जो child care के लिए आप आए थे. Actually, हम in our state right now, in our country right now, हमारे देश में we have over how many 48 crore births in a year, and out of that 2.5 birth every year. Yeah, 2.5 crore children are born every year, and out of that 30%, nearly 23 to 25% are premature babies, are babies which are underweight, and we don't have an NICU hospital in India, in Bombay. Neither do we have a pediatric hospital, nor do we have the required number of beds that are necessary to save each and every one of these, children. Children are actually turned away from the hospital. NICU hospitals जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं जो जल्दी पैदा होते हैं, they are underweight. They require specialized care, and हम कहते हैं कि हम आज इंडिपेंडेंस डे और हम कह रहे हैं कि हम बहुत आगे हैं और हम एज अ देश हम लोगों ने काफी कुछ अचीव कर लिया है. बट आई थिंक वेयर चिल्ड्रन आर कंसर्न्ड, वेयर दीज स्मॉल इश्यूज आर कंसर्न्ड, जैसे मेडिकल इश्यूज आर, आई थिंक दीज आर इश्यूज दैट नीड टू बी एड्रेस्ड बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अ चाइल्ड्स मोर्टेलिटी. एक छोटे बच्चे की मोर्टेलिटी की बात है. whether you can save that child just as far as it's not a question of money, it's not a question of whether the doctor is available or not. It's just a question of whether there is a bed available or not for that child and that specialized care that is required for it. So I think right now, according to what doctors told me, the statistics are that we require हमें 1000 बिस्तरों की ज़रूरत है NICU के लिए, and neonatal units जो मतलब that are required, or we have close to only 300. So there are 700 children that are dying on a minimum every time there is a child is taken to the hospital or something like that. So we need that. There is a need for it, and I would definitely suggest and encourage people. उनको बोलूँ कि ज़रूर जाइए और I think that that is one of the causes that should be stood for. जिसके लिए हम खड़े हो सकते हैं और बोल सकते हैं, जिसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं. अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हमें जरूर करना चाहिए उसको. As a mother, like, what is the very basic thing you feel like to bring up a child? And you said like lots of things. What are really need of an hour, like something about the basic thing, like when a child is born. I think when a child is बच्चा जब पैदा होता है तो basic I think would be the requirement of hygiene. I think वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत अहम चीज़ है जो हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियाँ उसी की वजह से आती हैं. I think डॉक्टर ने भी कहा है हमको, अगर हम जनरली हमारे इर्द गिर्द जो हैं साफ रखें, स्वच्छ रखें, और especially newborn babies, I think that our mortality rate would definitely go down just by that one fact itself. आज Independence Day है, कैसे celebrate कर रहे हैं आप? I am celebrating Independence Day by coming here today and standing up for something that I believe in. आज Independence Day है, जैसे मैंने कहा है, और हम कहते हैं कि हमारा देश बहुत आगे बढ़ गया है, और हम बहुत गर्व लेते हैं कि हमारे देश को मतलब 60 साल हो गए हैं, and it's something that we are very proud of. And but at the same time I also feel that
we should at the other end of it take these causes to heart as well. जिस चीज के बारे में हम कुछ कर सकते हैं, definitely कुछ कर सकते हैं. It is not such a vast problem कि हम इसको solve नहीं कर सकते. अगर 2-3 लोग मतलब एक साथ हो जाएं और you know 2-3 people get together or whatever, we have so much money in our country. It's not that we don't. कितने court cases हमको prove कर चुके हैं. तो